everyone, my name is Mandira. Welcome to AglaSem, and today we are going to be doing Class 7, Chapter number 3, How State Government Works. So in this chapter we are going to focus on how the state government is elected, हमारी states में किस type की governments होती हैं, and how do they function, what is their job. Okay, so I'm sure that you must have heard of the term MLA. यहाँ पर हम सबसे पहले वो term describe करेंगे, and then I will explain the little story to you, and then we will carry forward with the chapter. So let's start with chapter number 3, heading number 1. Who is an MLA? So MLA का हम सबसे पहले full form करते हैं. MLA क्या होता है? Member of Legislative Assembly. Now what does that mean? So हमारे यहाँ जो जितनी भी states हैं, all the states in India are divided into constituencies. Okay, so for example, I think Delhi is divided into 70 constituencies, and so here the example is given that Himachal Pradesh has 68 constituencies. Okay, so just because Delhi is a large state, okay, and every state actually it is not possible कि आप हर state में जाके उनके एक ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर हो जो सारी स्टेट के सारे एरियाज को रूल कर ले. इट इज नॉट पॉसिबल लाइक दैट. सो देयर हैज टू बी सर्टेन सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर. जैसे हमारे country में it is divided up into states for better administration. Here again the states are divided into constituencies. Okay, so personally हम लोग दिल्ली में रहते हैं, so 70 constituencies are there in Delhi. Okay, now on each of the constituency हर जो एक पॉपुलर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ऑल दीज पार्टीज वो अपने कोई ना कोई कैंडिडेट को खड़ा करते हैं इलेक्शन में. दैट फॉर एग्जाम्पल राघव चड्ढा इज स्टैंडिंग फ्रॉम जस्ट कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन फ्रॉम राजेंद्र नगर और एनी काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी. आपके एरिया की कौन सी है, प्लीज फाइंड आउट एंड टेल मी. So what they do is they basically make their party members contest election on each of the constituencies. ठीक है, तो अब जैसे 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं दिल्ली में, तो 70 के 70 मेंबर्स बीजेपी के भी खड़े हैं, आम आदमी पार्टी के भी खड़े हैं, एंड एनी अदर पार्टी और एनी अदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दैट विशेस टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन. ओके, सो यहाँ पर ये सब लोग खड़े हैं. अब होता है इलेक्शन वेयर वी डायरेक्टली गो एंड वोट फॉर द पर्सन्स और द पार्टीज. हमारी चॉइस है हम किसको वोट करना चाहते हैं. कि if some people give more preference to the candidates, some people give more preference to the parties, so then the election happens, then the voting happens, and after the votes are counted, it is assumed that जिसकी भी 70 में से बेसिकली जितनी भी सीट्स एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं उसकी 50% से ज्यादा जिसकी पार्टी की सीट्स आएंगी उन्हीं का जो लीडर होगा वो चीफ मिनिस्टर बनेगा. इट इज वेरी सिमिलर टू आवर सेंट्रल इलेक्शंस. ठीक है, वैसे ही स्टेट लेवल पे इट इज प्रीटी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न. सो ऑब्वियसली द एग्जांपल वी वर यूजिंग 70 सीट्स है अगर दिल्ली में, तो 70 में से 35 से ज्यादा ऊपर जिसकी जिसके एमएलएस जीतेंगे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जैसे ही 50% से ऊपर हो जाएगा दैट पार्टी विल गेट मेजॉरिटी एंड उन्हीं का जो लीडर होगा वो चीफ मिनिस्टर बनेगा. सो इन हियर आई थिंक लास्ट टाइम जब इलेक्शंस हुए थे तो 61-62 सीट्स, आई कैन नॉट रिमेंबर द टॉप ऑफ माय हेड, बट यस somewhere above 60 seats were secured by Aam Aadmi Party, and of course their leader is Mr. Arvind Kejriwal, so he became the chief minister of Delhi. Okay, similarly in Himachal Pradesh जो ये example यहाँ पे given है, वहाँ पे 68 constituencies हैं and भारतीय जनता पार्टी की 44 seats secured हैं. Okay, so 68 divided by 2, again it is 34. 34 से 10 ज्यादा उनके पास सीट्स हैं भारतीय जनता पार्टी के पास. So whosoever is the leader of भारतीय जनता पार्टी in that region will become the chief minister. Sometimes parties will reveal कि वो किसको chief minister बनाना चाहते हैं. Sometimes they won't, and it is decided towards the end. It is completely dependent on the party rules or वो how they want to do it. Okay, so now let's come back to the story that I was referring to. अब आपको MLA का मतलब तो पता है. MLA वो होता है जो उस constituency से जीता हुआ candidate है. Okay, so for example, if someone lives in Rajendra Nagar or so on, sorry if I'm quoting the wrong example, but yes, their MLA in Delhi will be Raghav Chadha ji or Atishi, from some other area, from Ashram or whatever. And as I said, आप मुझे जरूर बताना कि आपके एरिया के MLA कौन है. Please ask your parents which constituency you live in and who is your MLA and whether your parents voted for that MLA or not. Okay, so do comment. Yes, so you're coming back to the story. There is a village called Patalpuram. वहां पर वाटर स्ट्रीम्स इन्फेक्टेड होने की वजह से बहुत लोगों को डायरिया एंड वाटर बॉर्न डिजीज का प्रॉब्लम हो गया है. सो अराउंड 10 people they say that have died due to diarrhea, and diarrhea is a very treatable kind of condition. So the fact that people are dying because of diarrhea is very alarming because it really
throws light कि the state has failed to manage the sanitation system well. उन्होंने पानी को साफ रखना, they weren't able to do it, and that's why people are drinking the infected water, consuming it, and they are dying it. Okay, so that is completely this can be 100% blamed on the sanitation department of the area. So इसी चक्कर में लोग काफी ज्यादा नाराज हैं. वहां पर एक एमएलए भी आए हुए हैं जिनको लोगों ने घेराव कर लिया, जिन्होंने people surrounded the MLA and they started asking questions. They said that they were really angry that why he hasn't done something, why he hasn't put enough effort to clean water streams, why he hasn't done enough effort to uplift the medical system out there. वहां पर हॉस्पिटल्स में भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो एमएलए जी वहां पर क्यों नहीं काम कर रहे. तो आप देख सकते हो कि सैनिटेशन डिपार्टमेंट भी एमएलए ही रिस्पॉन्सिबल है, हेल्थ डिपार्टमेंट है ना, जितने भी एक स्टेट का आपके एरिया का जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके जो व्हाट यू कैन से रिप्रेजेंटेटिव या फिर जो एक आंसरेबल बंदा होता है वो एमएलए ही होते हैं. ठीक है. सो पीपल आर सॉर्ट ऑफ they are saying that you have not done as much as you should have done, so this is wrong, and he is sort of blaming the opposition कि कुछ हो रहा है, and that there is a political environment there. So this is the story of Patlipuram. Okay, as I told you, MLA का कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. मेजोरिटी क्या होती है, 50% से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे जिस पार्टी के कैंडिडेट्स जीतते हैं दैट पार्टी इज सेड टू हैव मेजोरिटी, एंड हुएवर हैज मेजोरिटी विल हैव देयर चॉइस ऑफ द सीएम. ओके, बट दैट डज नॉट मीन कि बाकी के जो जीते हुए एमएलएज हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी पार्टी की 40 सीट्स आ गई 70 में से, तो 30 एमएलए आप देख सकते हो कि बाकी किन्हीं पार्टी से भी जीते हैं. Still, those MLAs are still responsible for their own constituency. It doesn't matter कि, for example, अगर आम आदमी पार्टी has won in Delhi, that doesn't mean that if 6, 7, 8, 9 जितनी भी seats दूसरे पार्टीज की, कांग्रेस, बीजेपी जिनकी भी आई हैं, that doesn't mean that their MLA can now take vacation. ऐसा नहीं है. They also have to keep working for the 5 years because they have been popularly elected. Okay. So, अच्छा, जो सेकंड आती है पार्टी सबसे बड़ी, you can understand it as that is called the opposition. ठीक है. तो जो हमारी एक फॉर एग्जाम्पल आप इस एग्जाम्पल में देखिए पेज नंबर 33 पे, भारतीय जनता पार्टी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस इज क्लियरली द ऑपोजिशन पार्टी बिकॉज इट हैज 21 सीट्स ऑन दैट. ठीक है. तो जो पार्टी जीती है उसके बाद जो सेकंड आती है पार्टी, दैट इज कॉल्ड द ऑपोजिशन पार्टी. ओके. सो नाउ these were the concepts जो हमारे related थे MLA, constituency, majority and opposition से. Now अब क्या होता है, अब let's study what happens after the elections. Okay, after the elections the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister. Again, as I said, because a certain party has won majority, उनका leader जो है वो chief minister बनेगा. ठीक है. And then the chief minister appoints other ministers. For example, if Arvind Kejriwal ji is the chief minister of Delhi, he will appoint a health minister, education minister, all the departments. वो खुद अपने जो candidates होंगे जीते हुए उनको appoint करेंगे as a health minister or education minister. For example, I think Delhi में कोरोना वायरस के during हमको काफी पता चला that our health minister is Mr. Satyendra Jain ji. तो that is again वो हमारे health minister हैं. कुछ क्या कभी क्या होता है कि as an MLA they also have to function and as a minister they also have to function. So for example Manish Sisodia ji या फिर और भी आप देखना MLAs जो है हमारे, I'm sorry I'm using Delhi examples because I live here, so they basically have to work as MLAs also and they have to work at that particular portfolio also जो भी है education, health जो भी उनको मिला है. So dual role हो जाता है. ठीक है. In Himachal Pradesh, Shri Jairam Thakur ji has been elected as the leader and he becomes the chief minister. He then selects other ministers and after the elections, the governor of the state appoints the chief minister and other ministers. ठीक है. तो governor जो होता है एक he does not belong to any party, he is central appointed. तो वो centrally appointed होता है, kind of unbiased, and he will appoint the chief minister and every other minister. Okay. So as I told you, कभी MLAs have dual responsibilities also. अगर वो उनको कोई पोर्टफोलियो मिल जाता है जैसे हेल्थ का या किसी और चीज का, so उनको डबल काम करना पड़ता है. ठीक है. Now let's come to the next heading which is a debate in the legislative assembly. अब जो हमने पाटलिपुरम का एग्जाम्पल पढ़ा था उसी के रिगार्डिंग 6 MLAs are debating. So let's study their debate in a bit brief. Okay. First MLA is saying that अखंड गांव जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, there were 15 deaths because of diarrhea and he thinks that it's a shame that the government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea while proclaiming itself to be a champion of technology. जैसे मैं आपको बता रही थी, diarrhea is not a very complicated disease. It's it's pretty treatable
एंड इट्स ऑल्सो वेरी मच प्रिवेंटेबल, मतलब अगर आप क्लीन वाटर को ड्रिंक कर रहे हो, क्लीन वाटर से बना हुआ खाना खा रहे हो, आपको डायरिया नहीं होगा, ठीक है. सो इट इज ऑन द लैक ऑफ द सैनिटेशन डिपार्टमेंट कि दे डिड नॉट क्लीन द वाटर वेल इनफ. ओके, सेकेंड एमएलए क्या कह रहे हैं कि माई क्वेश्चन इज वाई आर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच बैड कंडीशन. जो लोग बेचारे ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, शायद उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छा सा ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा है या बेड्स नहीं मिल रहे हैं. सो ही सेज दैट आई वुड लाइक टू ऑल्सो नो हाउ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्लान्स टू डील विद द सिचुएशन विच इज अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. दिस इज एन एपिडेमिक, ठीक है. इट्स वेरी सिमिलर टू आवर करंट सिचुएशन ड्यूरिंग द पैंडेमिक कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, दे हैव टू बी इक्विप्ड, ठीक है, दे हैव टू बी क्वालिफाइड एंड इक्विप्ड टू डील विद इट. तो वो कह रहे हैं कि सेकंड एमएलए की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की भी कंडीशन बहुत खराब है. सैनिटेशन की तो गलती है ही, हॉस्पिटल की भी प्रॉब्लम है, ठीक है. थर्ड एमएलए इज सेइंग कि तोलपाटी टू हैज सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर, 3-4 किलोमीटर तक women have to travel. फोर्थ एमएलए इज सेइंग कि सब लोग के सब एग्जैजरेट कर रहे हैं, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं प्रॉब्लम्स को. वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस. ओआरएस पैकेट्स, ओआरएस जो होता है ना, ओरल रिहाइड्रेशन जो होती है, जिसको डायरिया में इट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू डोंट लेट योरसेल्फ डिहाइड्रेट, ठीक है, अदरवाइज इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू योर बॉडी. सो सेड कि ओआरएस के जो पैकेट्स आते हैं, आपने कभी देखे होंगे ऑरेंज फ्लेवर्ड ओआरएस, जब भी आपका पेट खराब होता होगा आपकी मम्मी जरूर आपको देती होंगी. इट इज अ ओरल रिहाइड्रेशन जो होता है हमारे, तो उसको वो पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं टू बेटर डील विद डायरिया. एंड ही सेइंग कि प्लीज डोंट एग्जैजरेट द प्रॉब्लम्स. फिफ्थ वन इज सेइंग कि बहुत पुअर फैसिलिटीज है हॉस्पिटल में, डॉक्टर बहुत लंबी लंबी लीव पे जा रहे हैं. इट इज अ शेम, बहुत ज्यादा सिचुएशन बैड से वर्स हो रही है, ठीक है, और बुरी होती जा रही है. Then the sixth one is saying that opposition members unnecessarily blame करे गवर्नमेंट को. Previous government did not pay attention to sanitation. ये बहुत होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है स्टेट में, कोई भी कंफ्लिक्ट होता है, तो उसमें हमेशा पुरानी गवर्नमेंट्स को बहुत ब्लेम किया जाता है कि हम लोगों ने चलो जो किया सो किया, लेकिन 10 साल पहले वो ये कर रहे थे, 5 साल पहले वो ये कर रहे थे. रिगार्डलेस ऑफ एवरीबॉडी डज इट, सो ही इज डूइंग द सेम थिंग, ठीक है. तो अब वो कह रहे हैं कि हमने वी हैव टेकन अ ड्राइव टू क्लियर गार्बेज दैट हैज बीन लाइंग अराउंड फॉर इयर्स, ठीक है. अब आपने देखा दिस वाज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ डिबेट दैट हैपेंस इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है. तो दिस इज बिकॉज अच्छा, एमएलएस टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ गवर्नमेंट. In common usage, the word government refers to the government departments and various ministers that head them. ठीक है, जो हम कहते हैं सरकार कौन है, गवर्नमेंट कौन है, तो गवर्नमेंट कौन है, जो आपके इलेक्टेड लीडर्स हैं, ठीक है, और उनके सारे पोर्टफोलियो वाले मिनिस्टर्स, उनका हेल्थ मिनिस्टर, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर, स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, ये सब चीजें, जल बोर्ड मिनिस्टर, ये सब, ठीक है. So all the MLAs who gather together in the legislative assembly are called the legislature, ठीक है. मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती हैं उनसे इलेक्ट होकर जब कोई मेंबर बनता है तो वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है. लेजिस्लेटिव असेंबली वो होती है जिसमें जाके वो डिबेट करते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है. और जो अभी हमने पढ़ा कि ऑल ऑफ देम गैदर टुगेदर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिस ऑल टुगेदर इट्स कॉल्ड द लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर या सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है. तो दे आर द वंस हु ऑथराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क. तो एमएलएज ही देखते हैं कि क्या क्या काम हो रहा है पूरे स्टेट में. ओके, नेक्स्ट लेट्स कम टू द नेक्स्ट हेडिंग व्हिच इज दैट ऑफ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज करी गई है, दैट इज दैट ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस. ओके, सो सून आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द हेल्थ मिनिस्टर. अब आप देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है. प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होती है जिसमें हेल्थ मिनिस्टर इनवाइट्स द मेंबर्स ऑफ द मीडिया, ठीक है, बिकॉज हम जो सिटीजन्स हैं हमें तो न्यूज चैनल देख के या सोशल मीडिया से ही न्यूज मिल रही है. तो वहां पर जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द गवर्नमेंट, दे इनवाइट मेंबर्स ऑफ द मीडिया एंड दे ओपन इट टू आस्क क्वेश्चंस. वो अपनी थोड़ी सफाई देते हैं कि हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, और साथ में क्वेश्चंस लेते हैं मीडिया के, मेंबर्स ऑफ द मीडिया से, ठीक है. सो इट इज अ वेरी टू वे डायलॉग, नॉट वन वे. तो ये होता है हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस to strengthen the soul of a democracy, because then you are questioning your leaders, and when you are questioning your leaders you are strengthening the soul of the democracy. आपके elected leaders से आप पूछ रहे हो कि तुमने क्या काम किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया. okay, you don't take them for granted कि एक बार इलेक्ट हो गए तो 5 साल तक हम इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. and they should also not take the public for granted कि वी आर अकाउंटेबल फॉर आवर वर्क, या अगर हम कुछ गलत करेंगे देन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें जवाब देना पड़ेगा. वी हैव टू आंसर टू द मीडिया एंड इन टर्न टू द सिटीजंस ऑफ अ स्टेट और अ कंट्री. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ द गवर्नमेंट हैड टेकन. रिपोर्टर्स आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस एट दिस मीटिंग. These discussions were then reported in different newspapers. ठीक है, बेसिकली जो सरकार है वो अपनी बात पब्लिक तक
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू ही पहुंचा सकती है। ओके बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आप कभी भी यूट्यूब खोलो, उस पर किसी भी पार्टी की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के गूगल कर सकते हो। इट इज वेरी लाइक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। लोग उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, बड़े ब्लंटली क्वेश्चंस पूछते हैं इनफैक्ट, सो दे हैव टू आंसर जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। अभी कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, यू कैन वॉच एनी ऑफ दोस। सिमिलर, इट इज अ वेरी सिमिलर एग्जांपल, क्योंकि वो भी एक हेल्थ रिलेटेड क्राइसिस है। ठीक है, इसीलिए इसमें हेल्थ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सो चीफ मिनिस्टर भी थे। चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट ही थॉट द प्रॉब्लम वाज नॉट ओनली ऑफ द सैनिटेशन बट ऑल्सो लैक ऑफ क्लीनिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो ये तब हुआ है जब नेक्स्ट वीक चीफ मिनिस्टर्स एक्चुअली विजिटेड पाटलिपुरम, बिकॉज इट वाज वन ऑफ द villages that has suffered a lot, और उन्होंने जो फैमिलीज के मेंबर्स नहीं रहे उनको थोड़ा कॉम्पनसेशन भी ऑफर किया। ये भी अभी कोरोना वायरस के टाइम पे हुआ था, व्हेन एक्सप्रेशिया अमाउंट जिसको कहते हैं, कि डॉक्टर्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर सेविंग द कंट्री, हमारे जो हेल्थ केयर मेंबर्स थे, स्पेशली डॉक्टर्स जिन्होंने कोरोना वायरस, जिनकी डेथ कोरोना वायरस से हो गई बिकॉज दे वर ट्रीटिंग अदर पेशेंट्स, उनके फैमिली को आई थिंक 1 crore रुपीज एक्सप्रेशिया सीएम वाज गिविंग आउट। तो इट इज अ वेरी गुड मूव, उनको आप कॉम्पनसेट कर सकते हो बिकॉज दे हैव लॉस्ट, देयर फैमिली मेंबर हैज लॉस्ट द लाइफ, देयर लाइफ बिकॉज ऑफ समथिंग दैट द गवर्नमेंट शुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, सो ये बात है। अच्छा, so as you saw above, people in power like the chief minister and minister have to take action. They do so through various departments like public works department, agriculture, health, education. इन्हीं को मैं पोर्टफोलियो, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही पोर्टफोलियोज होते हैं। एग्रीकल्चर, हेल्थ हो गया, ठीक है, एजुकेशन, ये सब। Newspaper and media widely discuss the issues that the government has to respond to, for example by holding press conferences. तो मीडिया का बहुत अच्छा रोल है, हम आगे पढ़ेंगे एक चैप्टर में, बहुत ही हमारा क्रूशियल रोल है मीडिया का, that it is making the role of the media is to make leaders accountable for their actions. Okay, हमारे को leaders से questioning करने की, what you are doing, what you are not doing. If we have elected you, you should be worth our vote. वो जो काम है वो मीडिया बहुत अच्छे से प्ले करती है। Okay, so next we come to the next topic. In the democracy, people who elect representatives as the member of legislative assembly, and the people, thus it is the people who maintain the authority. ठीक है, हमने ही एमएलएस को जाके वोट दिया है, दे आर द पीपल ऑफ आवर चॉइस। सो इनडायरेक्टली हम लोग अपने चॉइस के एक लीडर से अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी को रूल करवा रहे हैं, सो वी आर रूलिंग। सेकेंडली, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनसे हमेशा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो अगली बार उनको वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, एंड दे ऑल्सो नो दैट। So again, it is leading to a very transparency, the effect of transparency in a democracy, right? So again, that means that we are ruling our own state or our own country. Power is in the hands of the citizens. Okay. Last topic करते हैं फटाफट से, which is that of wallpaper project. This is a very cute project. आप इसको अपने स्कूल में भी try कर सकते हो, और you can try it and send it to me also. It's इन्होंने डेंगू के awareness के लिए I think beautifully they have done. Class 6B of Kendriya Vidyalaya, Hindan Ghaziabad, Uttar Pradesh. If you look at page number 40, they have this board that they have, they've collected all sorts of information about dengue. They have researched it. They have pictorially represented it. उसमें उन्होंने information लिखी है और उसका एक wallpaper बनाया है. It is looking really beautiful. जैसे कि अभी पाटलिपुरम में हमारी एक क्राइसिस हुई थी सैनिटेशन से रिलेटेड, वैसे ही अगर आपके आसपास, जैसे अभी कोरोना वायरस का टाइम है, डेफिनेटली अगर यू आर स्टिल अभी स्कूल आपका खुल गया है, देन यू कैन गो एंड मेक अ वॉलपेपर अबाउट कोरोना वायरस, हाउ टू प्रिवेंट इट, व्हाट वर द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस पीपल हैड टू डू, एंड ऑफ कोर्स शेयर विद मी इफ यू लाइक. So this was the chapter. The main concepts we did were constituency, which is I told you एक state को multiple जो areas में divide किया जाता है, that is called a constituency. Majority वो होती है जिसमें more than half votes एक पार्टी को मिल जाते हैं. Opposition क्या होती है? Second idea, जो पार्टी सबसे ज्यादा second number पे जिसको votes मिले, and that role क्या होता है about questioning the government. जो जीती है पार्टी उनको leaders को बार बार question करना और पूछना what you are doing. ठीक है. और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है? गैदरिंग ऑफ जर्नलिस्ट फ्रॉम द मीडिया हु आर इनवाइटेड टू हियर अबाउट and ask questions about a particular issue that are expected to report to the larger public, questioning the government, reporting to the citizens of a state. ठीक है? So I hope you were able to understand this chapter well, and if you do have any questions, please leave them in the comment section and do subscribe to the channel. Thank you so much for listening.